So it's finally the day. The altitude sickness has kicked in. Boys, we have finally made it to the top of Lupke Pass. I remember the day जब हमने लुपकेला पास क्रॉस किया. The feeling was surreal. और ऐसा लग रहा था कि मेन अचीवमेंट तो अनलॉक हो गई है और आगे का रास्ता इजी होगा. मगर शायद हमारी किस्मत बहुत बुरी थी. We got stuck in a snowstorm, making the next day journey very very difficult. And then another challenge. Today is the ninth day since this trek began, and as you can see, मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है. My lips, they're all torn apart or swelling हुई हुई है उनमें. And yesterday I didn't wear my sunglasses. उसकी वजह से I have severe eye infection and I couldn't sleep last night. So here, just putting up with it. I still can't see properly, but I think it'll get better when eye drops वगैरह use किए हैं. Today we are going to trek for another 11 hours, and आज we are planning to reach Wassam, which is a proper campsite, and I hope we can reach there very soon ताकि I can rest enough because I couldn't sleep last night properly. I later learned this was actually snow blindness. और because इस infection की वजह से I could not see properly, the trek became very very difficult. However, I had no choice. I had to keep going forward because जहाँ पर हम थे वहाँ आई ड्रॉप्स के अलावा कोई भी और मेडिकल रेमेडी नहीं थी. So we are finally at the lunch spot for today. The eye infection is not getting any better, but the important thing is to keep going. अभी lunch हम यहाँ पे करेंगे. We'll take a break for 45 minutes. और इसके बाद we will trek for another 4 hours. So I hope तब तक ये आँखों का मसला थोड़ा solve हो जाए. Because अभी it's just too bad and I can't see properly. Breathless and down again.
Finally, after trekking for nearly 11 hours, we have reached our today's campsite. This campsite is known as Vassam, and if it's not Vassam, it's close to Vassam, and it is right at the end of a very tiring and a very exhausting. I forgot the glacier's name. I think it's Baraldu Glacier. I'll correct it if it's not the right name. And man, I've learned that human endurance has literally no limit. I have nothing else to say. I'm so tired, but I'm very very glad that we have made it. And yeah. Here finally a good news thing. Right after this day, the difficult part of the trek was completed, and up ahead was only the entertaining and the fun bit. Today is the 10th day of this trek. 10th day since we have been camping, and we're all set for moving to our next campsite, which is Chakor. And we have heard it's 5 to 6 hours from here, so that's less than yesterday क्योंकि कल तो हमें 11 घंटे चले हैं. Hoping for a good day, and let's hope the weather is in our favor as well. Weather to shukar hamari favor mein hi tha, but now comes one of the most exciting parts of the trip, the Baraldu river crossing. So under normal circumstances, you have to cross this river twice or thrice on foot. However, once you do have to cross it using metal cables. So we have to cross the Baraldu river again, but इस दफ़ा हम on foot नहीं कर सकते, so we're going to use ropes. जिससे हमारा सारा सामान भी transfer होगा, and then one by one we are going to cross it again. So let's hope it all goes safe. Asim, any last wishes? No. Chaju! Chaju! And then finally, it was my turn. रह गए. आजा 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 आजा. खैर ये achievement भी unlock हो गई, and now it was time to enjoy our very first green campsite known as Chakor. So finally, after crossing the Baraldu river twice on foot or एक दफ़ा with the help of a wire, we have reached a campsite that is green. And to be very honest, इतने अरसे बाद इतनी greenery देख के कुछ अजीब सा लग रहा है, because we were either camping on ice or snow, or we were camping on glacier. We never camped on a green field. तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है. But I'm glad कि हम यहाँ जल्दी पहुँच गए, so we have plenty of time to rest. And so I guess today is a very good day. तो मैंने कहा नहीं बर्फ पे ऊपर दूसरा मसला ना वहाँ पे सारा माल ना वो गिरे ना अलग कर देते हैं वो मार्केट में. देसी कहाँ मिलते हैं? यहाँ तो कराची में ऐसा हुआ, एक दफ़ा मेरी अम्मी ने बताया कि मैं अंडे लाई थी एक बेकरी से. So 10th day of the trek today, 10th or 11th? 10th, 11th, I don't know. Khair. We are heading to Shimshal Pass today, which means we will be completing the third major stage of our trek, with the summit of Minglik Sar only remaining. Pretty excited because I saw the pictures of Shimshal Pass yesterday in someone's phone, and it seems very beautiful. It rained the entire night. I really want के मौसम थोड़ा clear हो ताकि we can actually enjoy the place. And inshallah, tomorrow we will make our summit attempt. So pretty excited for that as well.
Hi Allah, senorita. So आज का जो ट्रैक है टू शमशाल पास, बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर इन अ सेंड ऑफ 1 आवर, यानी कि 1 घंटे के लिए हम बिल्कुल चढ़ाई चढ़ रहे हैं. एंड देन आफ्टर दैट इट्स वी हैव हर्ड कि इट्स वेरी प्लेन, सो आई होप द व्यूज़ ओनली गेट बेटर. हमारी असेंट ख़त्म हो गई है, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. एंड हमारे गाइड हमें कह रहे हैं कि आगे का रास्ता इज़ वेरी प्लेन. इट्स अ 3 to 4 hours वॉक फ्रॉम हियर टू शमशाल पास, बट आगे असेंट नहीं है. सो रियली एक्साइटेड टू सेट कैंप at this beautiful pass that I saw in someone's phone yesterday. Really hoping for good views. We have reached our lunch spot for today. और इधर से आगे कम से कम 2 घंटे का ट्रैक और है. और we left at 9 और अभी 11:45 हो रहे हैं. यहाँ लंच ब्रेक होगी and then onwards. It's 3 PM और हम अपनी कैंप साइट पर पहुँच गए हैं. दिस कैंप साइट इज़ नॉट एग्जैक्टली एट शमशाल पास. हमने उससे थोड़ा पहले कैंप किया है बिकॉज वी हैड सर्टन प्लान्स. बट टुमारो हम ये करेंगे कि यहाँ से हम निकलेंगे जल्दी एंड वील गो टू शमशाल पास, बट इंस्टेड ऑफ कैंपिंग देयर वील गो डायरेक्टली एट द हाई कैंप ऑफ मिंगलिक सर. So that's how the whole arrangement is right now, and yeah, I mean looking forward to food now because I'm really hungry. So this is our beautiful campsite. काफ़ी ग्रीन है कंपेयर टू जितनी प्रीवियस हमने कैंप किए हैं. A little nervous I must say. कल हमारा summit push है and obviously very scared, but अल्लाह करे सब कुछ अच्छा हो जाए. And अभी नीचे आज हमारे लिए दुम्बा कढ़ाई बन रही है. सो इट्स लाइक अ सेलिब्रेटरी नाइट जिसमें हम लोग बस सेलिब्रेट कर रहे हैं आवर सक्सेस सो फार, एंड ऑफ कोर्स also to the porters are trying to wish us
the best of luck for our climb tomorrow. प्लान्स आप बहुत सारे बना सकते हैं, बट कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं. Due to a personal emergency with one of our group members, we had to abandon our summit push for Minglik Sar. However, that absolutely doesn't mean कि हमारा रास्ता ख़त्म हो गया है. So the change of plans. Abhi we'll be heading to Shimshal Pass in about a few minutes. हम यहाँ से निकलेंगे. We'll just spend some time there. And then आज ही वहाँ से आगे एक और गांव है छोटा सा जहाँ पे हम कैंप करेंगे. And then the main motive now is to get back to Shimshal village or Karimabad as soon as possible, considering the circumstances. We have reached Shimshal Pass Lake 1 और यही वो जगह है जहाँ पे आप अपना मिंगलिक सर का बेस कैंप सेट करते हैं. एंड दैट राइट ऑन द टॉप वो जो एक डोम नज़र आ रहा है, दैट इज़ बेसिकली मिंगलिक सर पीक. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट डजंट लुक लाइक मच एंड आई विश वी वर अंडर बेटर सर्कमस्टांसेस, बट खैर क्या कर सकते हैं. वी आर जस्ट गोइंग टू एंजॉय द लेक हियर एंड मूव अहेड, because I've heard कि आगे भी एक और लेक भी है इस पास पे. So let's see how beautiful that one is, but this one's obviously amazing to look at. The scenery keeps getting better. हम अब पहुंच गए हैं Shimshal Pass Lake 2 and since we don't have to walk a lot today, तो अब हम इस लेक पे भी एक लंबी ब्रेक लेंगे और आज टेक्निकली जो हमारा एक रेस्ट डे बन गया है इसको हम इंजॉय करेंगे.
So finally after successfully crossing Shimshal Pass हम अपनी आज की कैंप साइट पे आ गए हैं. This is actually another village quite similar to the one जिसमें हमने कल रात कैंप किया था. और आज हम यहाँ कैंप करेंगे and we are planning कि यहाँ से we can take 2 days to get back to Shimshal village. So yeah. We have reached our lunch spot for today, and as always right in the middle of nowhere but closer to water. यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, थोड़ा सूप शूप पियेंगे, and then we'll continue with our trek for 3 to 4 hours more till we reach the campsite for today. एंड फाइनली तकरीबन 8 या 9 घंटे की ट्रैक के बाद हम अपनी कैंप साइट पहुँच गए. वो जो सामने आपको घर नज़र आ रहा है वहाँ हम कैंप लगाएंगे. एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ कि ये हमारा आखिरी कैंप साइट है, बिकॉज कल विल बी रीचिंग शमशाल विलेज और वहाँ से हम करीमाबाद चले जाएंगे. सो it kind of feels emotional reaching the last campsite of this very long trek, but अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ बहुत ही सक्सेसफुली और बहुत ही सेफली हो गया. एंड बेशक अल्लाह की मदद के बगैर ये कुछ भी पॉसिबल नहीं था. We will also probably celebrate singing and dancing. थोड़ा सा सीन बनाते हैं आज, बिकॉज कल तो फिर हम सब अलग हो जाएंगे. I didn't know it was gonna feel this emotional, but I do feel really heavy. इतना लंबा ट्रैक, इतने देर से इन्हीं लोगों के हम चेहरे देख रहे हैं, and now finally it's coming to an end. It feels unexplainable. So presenting the last day of our trek. गले मिल गया माफ कर देना आपकी तभी बैंक पे शिकायत लगाने लंबी थी, अभी मैंने सोच दी है.
भाई कहीं और इस पे सोलर लगा हुआ शायद। जाने से पहले एक बार सारी यादें ताज़ा हो गई। वो स्नो लेक पे डांस पार्टी, करदू में ग्रोसरी शॉपिंग, जब एक बार रोड साइड पे कैंप करना पड़ा, द फर्स्ट स्टेप इनटू द स्नो लेक, लुपके पास का टॉप, और उसके बाद एक स्नो स्टॉर्म में फंस जाना। पहली ग्रीन कैंप साइट को देखकर एक खुशी का इजहार। नजीर भाई के गाने, साबित भाई की एग्जैस्परेशन क्योंकि हम बहुत स्लो थे उनके लिए। बरालदू ग्लेशियर जो कभी भी खत्म नहीं होता था, और जन्नत का मंजर पेश करने वाला शिमशाल पास। ये सब याद आएगा। ये पोर्टर्स जो अब हमारे भाई हैं, और ये शिमशाल की वादी जो कि एक छुपा हुआ हीरा है। यहाँ हर दूसरे घर में एक कोहे पे माँ है, और यहाँ के लोग मेहमान नवाजी खूब जानते हैं। ये सब याद आएगा। हाँ, इस बात पर यकीन ज़रूर है कि ये सफ़र का इख्तिताम नहीं है, एक वक्फा है, एक ब्रेक, क्योंकि आप जहाँ भी हो, आपका दिल, आपकी रूह हमेशा इन्हीं पहाड़ों में है।